Good morning, students. My name is Suvas Vora, Assistant Professor of Electrical Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. So today we are starting the new subject. The name is Indian Constitutions, यानी कि भारत का बंधारण. So first chapters, the name is Constitutions, Principles and Concept. So what is the constitutions? So constitutions means the concept of the constitutions, and the constitutionalism refers to the legal framework of the country. Constitutions यानी कि जो भारत का बंधारण है वो किस तरह से आया, और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी कि भारतीय बंधारण की बंधारणीयता, जैसे हम गुजराती में या हिंदी में बोलते हैं भारत का बंधारणीयता, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. सो द वास्ट majority of the contemporary constitutions describe the basic principle of state and the structures and the process of the government and the fundamental rights of the citizens in the higher law. यानी कि जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस को मैं इजीली अगर एक्सप्लेन करूँ तो बेसिक प्रिंसिपल है सभी स्टेट के लिए, एक स्ट्रक्चर्स और एक प्रोसेस है गवर्नमेंट के लिए, और द फंडामेंटल राइट्स यानी कि जो लोग हैं, जो सिटीजन्स है, उसको खुद के हक के लिए जो लॉज की बात करते हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशंस. It means that they cannot be unilaterally challenged by the ordinary legislative act. Legislative act आगे आएगा क्या है. बेसिकली जो लॉस के बारे में हम बात करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस को एक्सप्लेन करें, कॉन्स्टिट्यूशंस इज वो क्या है. So basically the working definitions of the constitutions is the set of the fundamental legal rules that the working definitions of the constitution is set of the fundamental legal political rules that the first one is are the binding on the everyone in the state and including the ordinary law making institutions. यानी एक ऐसा बाइंडिंग है सभी स्टेट के लिए जहाँ पे सबके लिए पर्टिकुलर लोगों के लिए है या पर्टिकुलर कुछ चीज़ के लिए एक लॉस डिफाइन किया हुआ है. जैसे कि हम बेसिक बात करें कि अभी ट्रैफिक का जो रूल्स है या किसी की हक के बारे में है, जैसे कि कोई लोग जो अभी वर्कर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल वर्कर्स है, तो वर्कर्स के लिए हम जो वैल्यूज़ देते हैं उसको पेमेंट देते हैं, उसकी जो वैल्यूज़ है उससे कम देते हैं, तो एक टाइप का उसका लॉस होता है कि जहाँ पे सभी वर्कर को खुद का एक हक मिले, तो वो हक लेने के लिए एक ऑर्डिनरी लॉज होते हैं. दिस वन इज द बाइंडिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशंस. देन आफ्टर द we can talk about the working definitions of the legal politicals. The main rules are the based on the widespread public legitimacy, then the harder to change than
ordinary laws, and the last one is as the minimum meet the internationally recognized criteria for the democratic systems. यानी कि the constitutions is defined that the supreme law of the country, which one is the based on the widespread public legitimacy. So the constitutionalism is the system of the governance under which the power of the government is limited by the rules of law. So are the harder to change the ordinary laws. It means that, for example, a 2/3 majority vote for the referendum is needed for the constitutions passed to the law. यानी कि जो मेजोरिटी वोट्स है वो 2/3 जितने होने चाहिए पर्टिकुलर लॉज को पास करने में लिए. एंड द मिनिमम मीट द इंटरनेशनली recognized criteria for the democratic systems in the terms of the representations and the human rights. जो एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज क्राइटेरिया होता है जहाँ पे रिप्रेजेंटेशंस फॉर द ह्यूमन राइट्स के लिए है. तो ये हमने जो बेसिक इंफॉर्मेशंस ली वो एक कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है उसके बारे में हमने देखा. नाउ द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस. सो कॉन्स्टिट्यूशंस का मेन फंक्शंस हम स्टार्ट करते हैं. उससे पहले द सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस कॉन्सेप्ट. The constitutionalisms and the constitutions is the defined as the supreme law of country. हम जानते हैं कि कंट्री के लिए एक सुप्रीम कोर्ट है जहाँ पे फाइनल फैसला होता है किसी भी केस के लिए, और उसके लिए जो सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्रीज है वो डिपेंड्स होती है ये कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत का जो बंधारण है उसमें जिसके लिए जिसका हक लिखा होता है उस बेसिस पे चुकादा होता है. एंड द constitutionalism is the system of the governance under which the power of the government is limited by the rule of laws. So the constitutionalism recognizes the need of the limiting concentrations of the power in the order to protect the rights of the group and the individuals. So in such a systems, the power of the government can be limited by constitutions and by the provisions and the regulations contained in it. So in order to understand of the two concepts as well as their similar and as a difference and their histories, the idea of the constitutions has changed significantly compared to the first examples in the ancient Greece, while the concept of the constitutionalism has grown around the principle that the authority of the government is derived from the limited by the set of rules and laws. So now we can talk about the functions of the constitution. So the functions of the constitutions can be declared and defined of the boundaries of the political communities. These boundaries can be territorial. It means that the geographical boundaries of the state as well as its the claims
to the any other's territory or the external territory rights and the person and personals, means that the definitions of the citizenship. Thus the constitutions often the designates between those inside and the outside of the administrations. So the constitutions can be declared and they define the boundaries of the political communities. The first point is that फर्स्ट पॉइंट में कंसिडर होता है कॉन्स्टिट्यूशंस में कि सभी पॉलिटिकल कम्युनिटीज़ के लिए एक डेफिनेशंस और डिक्लेरेशंस होता है कॉन्स्टिट्यूशंस यानी कि बंधारण, एंड दिस बाउंड्रीज कैन बी टेरिटोरियल, यानी कि ये जो बाउंड्रीज है वो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट as well as is the claims to any other territory or the external territory rights. यानी कि जैसे कि गुजरात है तो गुजरात की एक बाउंड्रीज है तो वो उसके अलग रूल्स होते हैं. जैसे हम जानते हैं कि स्टेट वाइज अलग अलग लॉज है कॉन्स्टिट्यूशन में, देन राइट्स है. नाउ द नेक्स्ट वन इज द Constitutions can declare and define the nature and authority of political communities. So in these points, the declare and definitions of the political communities, they often declare the state's fundamental principles and assumptions as well as इस जुरिक्शंस लाइज. यानी कि सेकंड पॉइंट्स में हम जो डेफिनेशंस नेचर एंड अथॉरिटी की बात करते हैं तो वो स्टेट के खुद के एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं एंड खुद के कुछ अजम्पशंस होते हैं. फॉर एग्जांपल द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशंस डिक्लेयर दैट द फ्रांस इज अ इंडिविजुअल secular, democratic and the social republic, and that the national jurisdictions belong to the peoples who exercise through the representative and that by the means of the poll. And these constitutions of the Ghana in the 1992 state that the jurisdictions of the Ghana reside in the people of the Ghana in whose the name of for whose welfare the power of the government are be expressed. So in the second, यहाँ पे जो दूसरे में है वो नेचर और अथॉरिटी की बात करते हैं जहाँ पे खुद की स्टेट के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं एंड कुछ अजम्पशंस किए होते हैं. सो नेक्स्ट वन इज द कॉन्स्टिट्यूशंस कैन एक्सप्रेस द आइडेंटिफाई एंड द वैल्यू ऑफ द नेशनल कम्युनिटीज. सो एज द नेशनल बिल्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशंस may define the national flags, anthem and other symbols and may make the proclamations about the values, history and identity of the nations. So in the next one is the constitutions can be declare and define the rights and duties of the citizenship. So in the fourth point, the constitutions have declared the rights and the duties of the citizens, यानी कि कौन कौन से हक है सिटीजन के और कौन कौन से राइट्स है. So the most constitutions include the declarations of the fundamental rights applicable to the citizens. At a minimum, these include the basis of the civil liberties and that care necessary for the open and the democratic society. So we can basically the freedom of the thought, speech, associations and the assemblies due the process of the law and the freedom
for arbitrary arrest and the unfull punishment, यानी कि यहाँ पे सभी सिटीजन को अपने बोलने का हक है, कौन कौन से राइट्स है वो है, अगर वो कुछ गलत करते हैं तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है उसके बारे में यहाँ पे है। Then of the constitutions can establish and regulate the political institutions of the community. So in this point the constitutions is the define the various institute of the government and prescribe their constitution's power and the fundamentals and regulate the relations between them. So almost all the constitutions establish the legislative and the executive and the judicial branches of the government, and in addition there may be symbolic head of the state institutions and the ensure the integrity of the political process। यानी कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशंस है उसको हम अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है यानी कि पार्ट में गवर्नमेंट के सब पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और सभी को कुछ पावर और फंक्शंस देते हैं और वो उस बेसिस पे वो ऑलमोस्ट एक दूसरे से सेम है। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर कोई लेबर का है तो लेबर की कोर्ट होगी, उसके लिए एक लेबर के लॉज लगेंगे। देन क्राइम है तो क्राइम के लिए क्रिमिनल लॉज है तो क्रिमिनल्स लॉ अप्लाई हो गए। उसी तरह सब गवर्नमेंट को अलग अलग रेगुलेट एस्टैब्लिश और रेगुलेट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में कंसिडर करेंगे। So the constitutions can divided or spread the power between the different layer of the government communities। जैसे ही मैंने अभी बताया कि अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए अलग अलग पावर्स और दे लेयर्स डिफाइन किए हैं। So the constitutions can declare the official religion's identity of the state and demonstrate the relationship between the sacred and the secular authorities। So then after the constitutions can commit the state of the practical social economic and the development of the goals। So now what is the constitutions in anywhere? So the definitions of the constitutions is quite complex and has a significantly involved during the last two countries। So almost everywhere we do is the governor by this some set of the rules, and these are the rules for the games like the soccer। अभी हमने जो पढ़ा कि what is the functions of the different functions of the constitutions। तो constitutions को easily समझने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से समझाया है कि ऑलमोस्ट एवरीवेयर वी डू इज गवर्नर बाय द सम सेट ऑफ द रूल्स। गवर्नमेंट ने एक ऐसे रूल्स सेट किए हैं। अब वो इजीली समझने के लिए हम सॉकर यानी कि जो फुटबॉल है उसके साथ कंपेयर करते हैं फॉर द सोशल क्लब्स एंड फॉर द एडल्ट्स इन द वर्क प्लेस। सो देयर आर द रूल्स imposed by the principles and the traditions that play an important roles in the telling us what we do and should do not। For examples, in the game of the soccer, referee has the full authority to enforce the rules and laws of the game on the players। यानी कि सॉकर्स में
फुल अथॉरिटीज़ होती है और फोर्सफुली रूल्स एंड लॉज फॉलो करने पड़ते हैं सभी प्लेयर को. व्हेन द प्लेयर डू समथिंग अगेंस्ट द रूल्स, रेफरी टेक एक्शंस लाइक अ सेंड ऑफ द प्लेयर. सो यू कैन सी हियर के यू डू नॉट पुल द अदर टीम मेंबर्स. यहाँ पे आप देख सकते हो, यू कैन डू नॉट शाउटिंग द प्लेयर्स. अगर यहाँ पे दो रूल्स होते हैं, एक येलो कार्ड और रेड कार्ड. येलो कार्ड होता है वार्निंग के लिए, यानी कि अब मैं इस गेम को कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में कंपेयर करूँ तो कॉन्स्टिट्यूशंस में सबसे पहले अगर आप गलती से कुछ भी भूल कर रहे हैं, नॉट इन दी क्रिमिनल साइड्स, तो भूल कर रहे हैं तो आपको वार्निंग देते हैं. एंड रेड कार्ड मीन्स यू कैन टोटली आउट ऑफ द टीम, आप नहीं खेल सकते और पनिशमेंट है. सो दीज आर दी सेकंड चांस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस. सो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशंस basic compared with the games now. So some rules are made by the legislators, also known as the Lok Sabha, Rajya Sabha in India, and for their on the countries are called the laws. So legislations और कुछ नहीं है. legislations means कि जो constitution है उसके सब पार्ट में डिवाइड करते हैं. So we need a laws in a society so our society can regulate and the work properly, and they are designed to protect us and our properties and ensure that the everyone is society behaves way that the community expect them to. So let us what can to expect as a consequence, the result of something else of the our actions, and the laws have been the glue that has kept society together, and without laws there would be the complete anachar. It means that suitable situations in which the people do not obey the rules and laws, and they can punish the punishment is decided by the constitutions. So what is the definitions of the constitutions? So according the Western concept, the constitutions is a document that contain the basic and the fundamentals law of the nations. This type of the books for the constitutions of the India. So the settings out of the organizations of the government and the principles of the society. So although the many countries have the written constitutions, we continue to see the phenomenon of living of constitutions in many parts of the world, and as the society change, so do laws and regulations. So the furthermore we can say that the some cases there is no single documents that define all the aspect of the state, but rather the several different documents and the agreements that define the power of the government and provide the comprehensive, although not unitary legal framework. So others constitutions has been defined as the basic norms or laws of the state. Another is the system of the integrations and the organizations of norms and laws and organizations of the government. So the constitutions provide the foundations of the government and the structures the political organizations and guarantee individuals and collective rights and freedoms.
So the typical concept of the constitutions is weekend divisions. So the most constitutions are divided and the subdivided into the parts that may various be known as the titles, chapters, articles, sections and paragraphs और clauses. यानी कि जो constitutions है वो divided है और सब divided है into the parts. और the titles होते हैं, chapters होते हैं, then articles होता है, sections, paragraph और clauses होते हैं. Then the arrangement की बात करते हैं. So the constitutions is a very in a arrangement of their provisions, although it is the now usual for the principles and the rights provisions to be placed in the separate sections and nearby in the text. So the constitutions, they have the two main parts, the government and peoples. So constitutions is connections between the governments and the peoples. And government is divided is the legislative, judiciary and executives. So legislative is connect with the makes law, parliament, Rajya Sabha, Lok Sabha. Then the judicial is the interpreters law, यानी कि जो जज होते हैं जो लॉज को इंटरप्रेट करते हैं. So the Supreme Court, Chief Justice of India and other judges of the Supreme Courts. And the executives, it means that they enforce the law. So the president, vice presidents, counseling of the ministry, authority, authoring journals and etc. So these are the basic concept of the constitutions. Now the layout of typical constitutions might resemble of the followings. So first one is the preamble. So the statement of the overreaching movings and the goals of the constitutions making the express, then sometimes refers to the important historical events, national identifications or the values. प्रीमेबल में हम ओवररीचिंग स्टेटमेंट्स और मोटिव या गोल होता है कॉन्स्टिट्यूशंस मेकिंग द एक्सप्रेसिव, यानी कि कुछ ऐसे रिफर्स करते हैं पुराने केसेस जिससे आइडेंटिफिकल सम रूल्स और रेगुलेशंस हो सकता है. देन आफ्टर द प्रिलिमिनरीज, सो द डिक्लेरेशंस ऑफ द जुरिक्शंस or of the basic principles of the government. So the name and the territory of the state, citizenships and the franchises, then state and ideology, value or the objectives are considered in the preliminaries. Then after the fundamental rights, a list of the rights including their applicability, enforcement, limitations, suspensions or the restrictions during the state of the emergency. Then after the social and economic rights or the political directives, then the parliaments of the legislative, so its structures and compositions, terms of the official privilege, procedures and so on. Then after the head of the state, the method of the selections, powers and terms of office. Then after the governments, in the parliamentary and the semi-president systems, so the government formations, the rules and the responsibility and powers. Then after the jurisdictions, the court systems, judicial appointments, then judicial independence, public persons are considered there. Then after the sub-national governments, then institutions of the fourth branch,
or intelligence branches, for example the electrical communications and the authorities, then after the security sectors. So these are the typical concept of the constitutions. So today we can learn about the what is the constitutions, then after the how the compare with the one games, then after the fundamental of constitutions, then what is the meaning of the constitutions, and the last topic is the typical concept of the constitutions, which have the two main parts. The first one is the divisions, यानी कि constitutions को किस तरह से डिवाइड किया हुआ है, एंड द अरेंजमेंट, उसमें किस तरह का अरेंजमेंट है वो हमने देखा. सो if any doubts of these lectures you can contact me. If any questions regarding this topic you can mail me. So my mail ID and the contact number is in your screen. Thank you.